नमस्कार, मैं डॉक्टर चैतन्य ओक और हम देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिटिकल केयर बेसिक्स। उसमें हम देख रहे हैं ECG ट्यूटोरियल्स और ये हमारा 21st ECG ट्यूटोरियल है, जिसमें हम देख रहे हैं साइनस नोड डिसफंक्शन के डिफरेंट रिदम्स। नाउ साइनस नोड रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया। रीएंट्री इसमें क्या होता है कि एक जो इंपल्स साइनस नोड से चालू होता है वो किसी भी लेवल पे आके फिर से उस टिश्यू में घुस सकता है। दैट इज कॉल्ड एज रीएंट्री। राइट। फॉर एग्जांपल, द इंपल्स कैन exit sinus node and again go in sinus node and cause reentrant tachycardia. This is called sinus node reentrant tachycardia। और जहां रिदम का बहने का रास्ता है, साइनस नोड से रिदम चालू है, एट्रिया में जा रहा है। सो मान लो देयर इज अ ऑब्स्टेकल इन द सम फाइब्रोसिस समथिंग, तो वहां पे अगर ऑब्स्टेकल है तो वहीं पे आके रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया शुरू कर सकता है। करंट वहीं फिर से आ सकता है और कोई एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं भी है, वहीं पे रिदम घूम सकता है फिर से। फॉर एग्जांपल एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन। और इन द एसए नोड, in the AV node there are two pathways। बाद में हम जब AV node देखेंगे तब आएगा, there is a slow pathway and there is a fast pathway। तो current can go through the slow pathway and come out of the fast pathway or vice versa and cause what is called as atrioventricular nodal reentrant tachycardia, AVNRT। और रिदम आगे जाके वेंट्रिकल से कोई दूसरे बाईपास ट्रैक्ट से वापस एट्रिया में आ सकता है। दैट इज कॉल्ड एज atrioventricular reentrant tachycardia या AVRT। So at all the levels there could be reentrant tachycardia, but what are we dealing with now is sinus node reentrant tachycardia। This is due to continuous activity of reentry within the sinus node, है ना। sinus node के अंदर ही बार बार वही करंट घूमता है, फिर से करंट जनरेट करता है। और साइनस नोड और द एसए जंक्शन, मतलब साइनस नोड से एट्रिया में आते हुए सडन ऑनसेट एंड ऑफसेट विद अ रेट दैट इज यूजुअली 100 to 160 बीट पर मिनट। सडनली चालू होता है, सडनली ठीक हो जाता है। और पी वेव प्रीसीड्स ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड हैज अ मॉर्फोलॉजी आइडेंटिकल टू साइनस पी वेव। मतलब जो मॉर्फोलॉजी है दैट इज नॉर्मल टू साइनस रिदम, और पी वेव की जो मॉर्फोलॉजी शेप है दैट इज वेरी सिमिलर टू द पी वेव जनरेटेड बाय द साइनस नोड। द पीआर इंटरवल आल्सो सिमिलर that of the sinus rhythm. Only abrupt onset and offset distinguishes this arrhythmia from the sinus tachycardia। sinus tachycardia से आप distinguish नहीं कर सकते उसको। For example, यहाँ पे देखो PQRS, PQRST, PQRST, similar P waves, QRS short है सब कुछ, and suddenly rhythm has slowed down। So ये sudden slowness जो हुआ वो देख के अपन now we can conclude that this was sinus node reentrant tachycardia and not sinus tachycardia। Another example, for example, यहाँ पे साइनस रिदम है, हार्ट रेट देखो अराउंड 3 big squares between the two RR, the rate is around 100 to 110, and P wave narrow QRS complex, PR interval normal, T wave। So suddenly यहाँ पे at this point ये this is a different wave because there is no sinus P wave नहीं है, there is a P wave of a different shape and QRS also is of similar shape, but you can see the contour is slightly different। So this is a atrial ectopic क्योंकि P wave preceding P wave is different। फिर यहाँ पे फिर से sinus beat चालू हो गया is P wave similar to what P wave आप देख रहे थे, and then यहाँ पे suddenly same PQRS configuration, but the rate suddenly has changed। So this is typical of sinoatrial node reentrant tachycardia। Can be initiated by a PAC, है ना। इसकी खासियत ये है कि atrial tachycardia cannot be initiated by a ventricular ectopic, but sinus node reentrant tachycardia can be precipitated by a atrial ectopic, by pacing, or by a ventricular ectopic, right? So this is special of sinus node reentrant tachycardia। The treatment, there is no specific therapy। Usually
आपको ट्रीटमेंट तभी देना है जब रेट रिलेटेड हार्ट का एलवी डिस्फंक्शन होने लगता है और कार्डियोमायोपैथी होने लगती है। कैरोटिड मसाज इज वेरी इफेक्टिव इन इट, है ना। कैरोटिड मसाज स्टिमुलेट्स द वेगस एंड वेगस हैज वेरी गुड इफेक्ट ऑन द स्टेनोम, so it abruptly terminates the tachycardia. You can use SNO rate reducing agents like adenosine. You can use verapamil, digoxin, amiodarone, and lastly, if it is troubling a lot, causing cardiomyopathy, radioablation is the final treatment. Tachy Brady syndrome. Tachy Brady syndrome में there is tachycardia and then followed by a sinus pause, long sinus pause. So this जो tachyrhythm है, that could be the most commonly it is atrial fibrillation. Sometimes जहाँ जैसे इसमें it is atrial flutter. Atrial flutter अपने आप terminate हुआ and then long sinus pauses. P wave भी नहीं है उसमें, right? So this is typical of Tachy Brady syndrome. What is Tachy Brady syndrome? Alternating bradycardia with paroxysmal tachycardia. मतलब अचानक tachycardia चल जाता है, followed by bradycardia. Often supraventricular inversion. Usually, most commonly, atrial fibrillation. On cessation of tachyarrhythmia, there is a period of delayed sinus recovery. There is could be sinus block, sinus pause, or sinoatrial exit block. If significant, this period is of delayed recovery. में उतना देर sinus atria tachycardia में थे, suddenly tachycardia stops, sinus node dysfunction के कारण P wave is delayed, and what happens is blood circulation brain को मिलता है, so it can cause syncope, dizziness or fatigue, palpitation. Symptoms are due to decreased cardiac output. Cardiac output को नहीं मिलता है तो कम हो जाता है, तो brain को blood supply नहीं मिलता। So यहाँ पे देखिए, this is a tachycardia, recover was, फिर से pause आया, फिर tachycardia, there is a long sinus pause, practically sinus arrest, सीधा फिर से tachycardia चालू हो गया। So this is typical Tachy Brady syndrome. So chronotropic incompetence. What is chronotropic incompetence? जब भी हम physical exertion करते हैं तब हमारा heart rate बढ़ना चाहिए, that is normal. But जब ये हार्ट रेट बढ़ाने की इनकैपेबिलिटी आती है, इनकॉम्पिटेंस आता है, हार्ट रेट बढ़ा नहीं सकते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड एज chronotropic incompetence. Physiologic inability to raise the heart rate to meet the metabolic demands, defined as inability to achieve 80% of age predicted maximum heart rate. So जो maximum heart rate उसका फॉर्मूला है, जो chronotropic incompetence का फॉर्मूला है, what is the maximum heart rate? 220 minus age. And अगर maximum heart rate minus resting heart rate divided by 220 minus age minus resting heart rate into 100, अगर ये कम होता है, less than 80% होता है, then this is called as chronotropic incompetence. The resting electrocardiogram usually is normal, but may be abnormal, and this is the formula that is used. Now we have seen various types of sinus node dysfunction. हमने देखा है sinus arrest, sinus pauses, हमने देखा है sinoatrial block, then we have seen sinus node reentrant tachycardia, उसके बाद हमने देखा sinus arrhythmia, we have seen Tachy Brady syndrome, chronotropic incompetence. These are all sinus node problems, and there could be various factors. बहुत detail में नहीं जाता हूँ, I have oversimplified this. There could be genetic problems, there could be idiopathic or aging, fibrosis related, there could be ischemia, especially MI, inferior wall MI. There could be heart failure, exercise testing, it could be because of diabetes or many other rhythm abnormalities. Now, this is a broad chart on how to treat a patient of sinus node dysfunction, right? Suppose you have ECG, जैसा हमारे पास मैं बता रहा था 2 दिन पहले, we had a patient who had a sudden sinus node dysfunction. आपको करना क्या पड़ता है? As soon as the patient comes, take an IV access, start oxygen, start continuous ECG monitoring, and जरूरत पड़ी तो पैड्स लगा के रखो, ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग के लिए पैड्स लगा के रखिए. See whether the patient is hemodynamically stable or unstable. And then you can refer to ACLS guidelines for bradycardia. If the patient is unstable, you can try atropine or transcutaneous pacing.
After atropine, if the patient remains unstable, है ना, तो what do we do? अगर transcutaneous pacing चालू करो, उसके बाद अगर BP कम है, तो you can start drugs that increase the heart rate as well as the BP. For example, dopamine and epinephrine. Usually avoid noradrenaline. So you can start with isoproterenol or dopamine, yeah, adrenaline. If the BP is normal or patient remains unstable, so transvenous pacing. And once the patient is stabilized, या आपने पेस कर दिया, transvenous pacing चालू कर दिया, once the patient is stabilized, then evaluate for reversible causes. Agar you find some reversible causes, for example, there was problem with the potassium, or there was problem with the calcium, electrolyte problems, or there was severe pain causing vasovagal problems, ऐसा कुछ होगा, treat appropriate cause. अगर sick sinus syndrome या sinus node dysfunction resolve होता है तो कोई problem नहीं, अगर resolve नहीं होता तो permanent pacemaker, right? अगर patient hemodynamically stable है तो you need not give atropine also. Just observe the patient, find out whether there is a reversible cause. If there is no reversible cause, if the patient stabilizes, well and good. If doesn't stabilize, then the final treatment is the pacemaker. Thanks for watching. यहाँ पे हम लोग sinus node dysfunction का different topics खत्म करते हैं. In the next topic, we will continue with the further conduction abnormalities. We will start with sinus tachycardia in the next lecture. Thanks a lot. Do subscribe and share.